One rule which is common everywhere: for every action there is an equal and opposite reaction. Simple एक न्यूटन थर्ड लॉ का रिएक्शन है. तो मार्केट में भी सिमिलर, बुल्स का रिएक्शन है तो बियर्स का भी बनेगा, बियर्स का रिएक्शन है तो बुल्स का रिएक्शन इज आल्सो गेटिंग रेडी. सो नाउ एक चीज समझना जरूरी है, मार्केट एज अ पावर टू रिमेंबर. आप कहीं ना कहीं एक चीज, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव सीन इट इन द चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है. इन शॉर्ट स्ट्रेट अवे हम देखने की कोशिश करेंगे. if bulls market is getting dominated, मान के चलिए from year to year it's a clear bulls dominated action, तो इसके बाद क्या होने वाला है उसका आइडिया किसी को भी नहीं है. अभी मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक करंट एग्जांपल ले लेते हैं विथ नो चार्ट ऑन माय राइट साइड. पिछला डेटा बोलना वो थोड़ा सा इजी बन जाता है, बट व्हाट इज नेक्स्ट नाउ आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, यहां से प्राइस विल फर्दर फॉल डाउन या फिर प्राइस विल फर्दर राइज बैक. तो व्हाट आर द प्लान, what are all the important things which we can get prepared right now for the upcoming trading day? चाहे trading week भी चलता है, but it's important. Traders, while you're watching this video, don't miss to subscribe my channel and just turn on the bell icon. And also in the description, you could find the Telegram channel, WhatsApp group link, and Twitter link also. So make sure to join the groups and channels so you will be getting live market updates, daily regular updates, webinars, videos, and much more. तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए प्राइस तो यहाँ पे क्लोज हो चुका, फाइन एंड फेयर डील है. तो फ्रॉम ईयर, या फिर मुझे ज्यादा यहाँ पे 25,000 के ऊपर बैंड निफ्टी, वेदर इट विल सर्वाइव, निफ्टी टिकेगा क्या, या फिर निफ्टी फिर से ड्रैग डाउन हो जाएगा, ये सब चीज दिस इज जस्ट टू क्रिएट एन हाइप. यहाँ पे आपके माइंड पे खेला जा रहा है. यू आर प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड टू सी ओके 25,000 राउंड नंबर, इट्स अ गोल्डन नंबर. यहां से प्राइस फिर से रीबाउंड हो गया तो बुल्स फिर से फुल कंट्रोल ले लेंगे, या फिर प्राइस फ्राइडे की सेशन में, दिस वाज अ फ्राइडे सेशन, 25,000 लेवल से ही प्राइस ने रेसिस्टेंस लेके नीचे आया. इसके बाद प्राइस तो निफ्टी 2%, 5%, 10% तो क्रैश होना ही है. सो दीज आर ऑल कंप्लीट डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो आप ट्रेडिंग में इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो. बी मोर मेच्योर्ड एनफ कि समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से क्या कुछ डेटा पॉइंट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं विच विल हेल्प इन आर अपकमिंग ट्रेड एंट्री, अपकमिंग ट्रेड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, आगे आने वाले अपॉर्चुनिटी को बिना डिस्ट्रैक्शन कैप्चर करके यूटिलाइज कर सकें. दैट्स द फोकस. यहां से प्राइस नीचे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है या फिर मोर ट्रेडिंग डाउन साइड का मतलब, आई हैव टू सिंपल जूम आउट द चार्ट. जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था जब तक प्राइस ऑल टाइम हाई या फिर ऑल टाइम लो पे नहीं है, देर इज सम प्रिंट विच हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट. पहला कोई डेटा होगा सर जहां पे प्राइस बुल्स या फिर बियर्स किसी ने डोमिनेट किया होगा, दोनों ने टाइम पास किया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा. ओके, सेम वे यहां पे नोटिस कीजिए बिलो 24,800, 700, 600 सारे लेवल में पहले भी ट्रेड हो चुका है. तो यहां पे हमको देखना यही है. आई डोंट नो हाउ मेनी ट्रेडर्स हैव वॉच्ड माय लास्ट वीडियो. I don't know how many traders have watched this video. If you have not watched, you can definitely watch, which is available in my channel, because I'll use the same approach here right now in this current example, probably to mark the zone. Okay, यहाँ पे notice कीजिए this 24,800 round number will take it over here. So before below 24,800, what is the activity? Just notice here. This was a quite slow action,
बट इसके पीछे डेटा पॉइंट्स आपको समझना जरूरी है, बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। ओके सर, यहाँ पे साइडवेज था, उसके बाद बुल्स ने डोमिनेट किया, दैट्स इट। ये सिंपल चीजें देख के उसके बाद छोड़ देते हैं कि सर ये ब्रेकआउट अपसाइड हुआ, बुल इसीलिए बुल्स ब्रेकआउट जोन है, ओके फाइन एंड फेयर। नहीं, प्रैक्टिकली इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एक प्लान तैयार करना जरूरी है। तो यहाँ पे बिलो 24,800 इज द करंट प्राइस। सो व्हाट वाज द एक्टिविटी, आप एक्टिविटी समझने की कोशिश कीजिए। एंड आई रिपीट, दिस बुलिश कैंडल इज अ न्यू ट्रेडिंग डे। ओके, ये जो भी पिछला ट्रेडिंग, लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूएशन इज नॉट देयर, इट्स अ न्यू ट्रेडिंग सेशन। सो बी क्लियर ऑन वन थिंग, फ्रॉम गैप डाउन से लेके गैप गॉट फिल्ड 1.5 डे में। ओके, अगेन बियर्स ट्राई टू केम इन, फिर से ऊपर, फिर से बियर्स ट्राई टू केम इन। तो इन शॉर्ट just notice one thing, the price went slow or sideways where in between this same gap zone only. Price could have went sideways here, या फिर यहां पे भी sideways हो सकता था, प्राइस बुल्स could have continued, उसके बाद स्लो हो सकता। नो, price was sideways almost in this gap zone only। तो इसका पीछे क्या है, why exactly bulls or bears, जो भी I'm talking about the smart players, professional traders, bulls and bears who are more into creating big positions, why are they selected or why have they selected this particular zone? Straightforward deal, just notice here, प्राइस यहां से स्मूथली मूव कर रहा था, हियर वाज द क्लस्टर, यहां पे प्राइस रुका, मतलब बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट। बुल्स एंड बियर्स बोथ वर इंटरेस्टेड टू ट्रेड because from here bulls are clearly dominating, not even allowing any bearish players to take control even for a clear one or two candle with a follow up, नहीं हो पा रहा था। But notice here, they were allowing bears and then taking control. इसका मतलब there was activity from both bulls and bears. Later on, bulls dominated. Just notice this. This is the top which has become bottom here, right? This activity zone between bulls and bears, जहाँ पे both were interested to do transaction. Okay. उसी का टॉप यहां पे बॉटम बना। तो व्हाट इज दिस, कैन वी टेल इट एज काइंड ऑफ एन zone mild resistance which was shown by the bears by just 2-3 candles. Now it is slowly allowed by the bulls to convert into support। मतलब यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि दिस इज द जोन, प्राइस यहां से स्ट्रेट अवे जंप कर दिया, नो, बिकॉज दिस जोन was shown interest by both the traders, which later on, जब यहां पे नोटिस कीजिए, the interest which was happening here for more transaction to develop, the interest is now shifting up। तो मतलब whenever anything shifting up is more favorable for a bull या फिर for a bear, obviously for a bull, right? And once this domination of breakout started, उसके बाद full day take control, price was in full control probably for that full particular trading session। तो उसके बाद नोटिस कीजिए सर, देन वाई गैप डाउन, सर ऑलवेज अंडरस्टैंड ओवरनाइट थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, बट हाउ गुड इट हैज रीबाउंडेड, नोटिस कीजिए, चेक दिस, प्राइस अगेन केम टू द सेम जोन, उसके बाद की मोमेंटम जस्ट ट्रैक इट मोर फास्टर, उसके बाद की मोमेंटम वाज मोर फास्टर। That is the reason I am repeatedly telling, below this 24,800 prices we need to have a clear plan कि what are all the possible scenario। यहाँ पे आप समझ आ रही है,
दिस इज नॉट ओनली कि प्राइस ने साइडवेज किया, ब्रेकआउट किया, देयर वाज एन क्लियर शिफ्ट of interest to do transaction between bulls and bearish players. Traders, while you're watching this video, don't miss to subscribe my channel and just turn on the bell icon. And also in the description, you could find the Telegram channel, WhatsApp group link, and Twitter link also. So make sure to join the groups and channels so you will be getting live market updates, daily regular updates, webinars, videos, and much more. And then bulls took control. Okay, price normally going sideways and breakout and doing this transaction shift जहां पे zone ही shift हो रहा है, interest shift हो रहा है towards upside, that is more powerful. That is more and more powerful. Now tell me, if price again start trading below the same 24,800, that is comes inside this same, already it's inside the zone, that is 24,800 is here. Okay, if price starts trading below this, so what are all the scenario? What are possible activity which can be developed? Further we have to क्रॉस चेक, यहाँ पे नोटिस कीजिए, दिस वाज अ सपोर्ट, फिर से यहाँ पे दिस वाज द सेम जोन जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स वर इंटरेस्टेड, द प्रीवियस सेम रिजेक्शन, प्राइस वन मोर टाइम मेड एन अटेम्प्ट. यहाँ पे प्राइस इफ स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 24,800, मतलब प्राइस इज रेडी टू चेक कि यहाँ पे वेदर बुल्स आर कमिंग, yes or no, because if they are coming again, then again price up, market will try to reverse. नहीं हो रहा है, by chance if price crosses easily या फिर it starts trading below this, इसका मतलब price will drag further down. That is where the high chances of price getting more controlled by the PS. तो from where it can get control, कहां पे रुकने की chances? Look at this. Till this, nothing special. यहाँ पे notice. This is again bears, bulls versus bears, buyers versus sellers का fight area. Right? Bears dominated, but very easily bulls took control. So this is where next interest zone is there, जहाँ पे bulls and bears were happy to do their large quantity transaction. अब समझ आ रही है कि चीजों को देखने में इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर लुकिंग. चार्ट आपके भी सामने है, मेरे भी सामने चार्ट है, बट हाउ यू आर टेकिंग द डेटा. अब सिंपल है, जब मार्केट उसी जोन पे या फिर इस लेवल पे, इस जोन पे या इसके नीचे रिएक्ट करना शुरू करेगा, ये तो सिंपल है सर, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है. सिंपली देखो, ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है या फिर ब्रेकआउट रिवर्सल हो रहा है, देखिए, दैट्स इट. उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी एंट्री करना आपको भी पता है. आप अभी भी इतना भी यू आर नॉट सो न्यूब कि आई हैव टू स्ट्रेट अवे गो बैक एंड डू दैट एंट्री कैंडल एक्सेट्रा. चार्ट पैटर्न आपको भी पता है. यहाँ पे मुझे स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे द थिंग इज प्रो लेवल लर्निंग. प्रो लेवल लर्निंग के लिए आपका एग्जीक्यूशन एंट्री पार्ट आपको भी पता है, इट्स इंपॉर्टेंट. जहां पे ट्रेडर्स लैग ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज इंटरप्रेटिंग द डेटा. चार्ट को समझने में मुश्किल हो रही है, चार्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी ज्यादा हो रहा है. कोई भी एक लेवल मार्क करना, जोन मार्क करना, आई रिपीट अगेन, वेरी इजी. उसके बाद का एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझना इंपॉर्टेंट. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्लियरली एक आइडिया आपको बोला था, एक मेथड अप्रोच बोला था कि प्राइस हाउ इट इज रिएक्टिंग, व्हाट आर ऑल द डेटा पॉइंट्स इट इज गेटिंग डेवलप. सो सेम वे अपसाइड में देखेंगे. सिंपल, व्हाई आई एम टेकिंग द फॉरवर्ड चार्ट जहां पे आगे कोई चार्ट नहीं है. मैं ये एग्जांपल क्यों वीडियो में ले रहा हूं, ताकि आप इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इट.
You will should not be की dependent on anyone. यहाँ पे independent trader बनना भी बहुत important है. So dependency level should drop down. तो यहाँ पे ऊपर की साइड में क्या कुछ सुना है? So what we can do multiple things. From the previous video, as I mentioned, weekly, taking a full week range, because upside we have full week range. Week started here, week ended here. Where was more interest was shown. This is the location. जहां पे there was more interest, bulls, bears, उसके बाद resistance. So this is the zone जहां पे there is more intent, more interest, more transaction happened between bulls and bears. जहां पे interest ज्यादा है, that is where activity can be more stronger, more faster, more low risk high reward opportunity मिलेगा. Now simple price, if it is gap up open हो रहा है by any trading day, price फिर से आ रही है. सिंपल चीजें देखना है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है तो इसी रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट कीजिए. पियर्स के साथ चलना इंपॉर्टेंट है. नहीं उसी जोन के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, प्राइस स्ट्रगलिंग टू मूव डाउन, इसका मतलब रिवर्सल का स्ट्रैटेजी यूज करना है. राइट, रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है. प्राइस इसके ऊपर स्टेबलाइज हो रहा है. आई मेंशन यू वन थिंग, कोई भी जोन हो, लेवल हो, प्राइस जितने देर उसके ऊपर टिक रहा है, बुल्स की डोमिनेट कभी भी आ सकते हैं. मोर प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन, नॉट बिटवीन, सॉरी, इन बिलो एनी जोन, इट्स एनी टाइम बियर्स कैन टेक कंट्रोल. तो इसके ऊपर प्राइस स्टार्ट ट्रेडिंग का मतलब क्या है सर? Price straight away pushed towards this. Why? This is a big range which was converted into resistance. So in short, यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे रेसिस्टेंस के तौर पे फास्टली कन्वर्ट होके प्राइस ड्रैग डाउन हुआ. तो इसके ऊपर स्टेबलाइज, दैट इज द इंफॉर्मेशन की what I have mentioned you one thing in the previous video or in multiple videos and webinars. Price moves up until they find strong sellers. Price moves down until they find strong buyers. Remember this, never ever forget this. Same methodology I have applied here. Price यहाँ पे टिक गया, बुल्स कंट्रोल लेना शुरू कर दिया by support, breakout. इसका मतलब price will search for strong sellers level. Strong sellers level यहाँ पे है. यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ. फर्दर अपसाइड. चीजें को सिंपल रखो. मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज किया नहीं, ज्यादा कुछ कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न की तरह बात किया नहीं, 1% भी नहीं. प्रैक्टिकली क्या किया? अंडरस्टैंडिंग द क्लियर पाथ of what is there, what are all the scenarios which has developed, and what could be the reaction. That's it. तीन चीजें देखो, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा. बट हम ट्रेडर्स, मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं सर? सर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन. सर जी चार्ट पैटर्न के पीछे और कितना देर ट्रेड करोगे? he or she as a trader, how many more month and year you are spending on chart pattern? You'll be wasting your perspective of looking chart in chart pattern. Changes is more important. It's time to change.